लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन रिवर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज डॉक्टर जावेद रऊफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान गैर मुस्लिम शहरियों को दोहरी वोटिंग का हक दिया जाए ताकि गैर मुस्लिम शहरी अपने मखसूस नुमाइंदे के लिए अपने अपने हलकों के लिए वोट देने का हक इस्तेमाल कर सकें। ये इक़दाम मजहबी अक़लियतों की जमहूरी शिरकत और सियासी नुमाइंदगी को बढ़ाने का मकसद रखता है ताकि उनकी आवाज़ें अक़लियती और मखसूस इंतखाबी मामलात में सुनी और समझी जा सकें। प्रीस्ट भी हूँ और लीडर भी हूँ और मेरे साथ इस मुल्क के बड़े मशहूर और मरूफ हमारी कम्युनिटी के लीडर्स इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, जिनमें बिशप नईम प्रसाद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, बिशप सलामत साहब, और दूसरी तरफ पास्टर शौकत शारून है, पास्टर एल्फर्ड हैं, और सुहेल रऊफ साहब हैं, बाबर पॉल साहब हैं, थॉमस याकूब हैं, और हमारी काउंसिल आसिया इस्माइल जो है, एडवोकेट आसिया इस्माइल इस जगह पर मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं अपना जो स्पीच है वो पहले आपके सामने पेश कर दूँ। Here today, my name is Reverend Dr. Javed Rauf and I stand before you as a representative of Christian community in Pakistan, a community that has been long have been marginalized and denied its fundamental rights. Today I am here to announce a significant step in our fight for justice and true representation, the filing of a public interest litigation case against the Federation of Pakistan and Election Commission of Pakistan. For decades, the Christian community in Pakistan has faced systematic discrimination and violence. Our homes have been burned, our people attacked, our voices silenced. We have been denied our rightful place in society, and nowhere is more evident than our lack of representation in the Hall of Powers. Since 1979, the prevalence of military dictatorship have fueled religious extremism in our country. Christians are often viewed with suspicious, seen as an agent of so-called Western agenda and labeled as infidels. This has led to severe persecution with extremist organizations systematically targeting our community. One of the most glaring injustice we face in the manner in which our parliament representation are selected. Instead of being allowed to elect our own representation, Christian members of parliaments are handpicked by the political parties. These appointed representation often do not truly represent the interest and concern of our community. They are chosen to serve the interest of the parties that appointed them, not the people they are supposed to represent. We believe that this practice is fundamentally undemocratic and violates our right as Pakistani citizen. Every community deserves to have the voice in parliament that genuinely reflects its views and struggles. We demand the right to elect our own representatives free from external influence and manipulation. Today, I am proud to announce that we are taking our fight to the courts. We are filing a public interest litigation case against the government of Pakistan, challenging the current system of selecting Christian members and other non-Muslim members of parliament. Our goal is simple: to ensure that Christians and all non-Muslims in Pakistan have the right to self-elect representatives who will genuinely advocate for our rights and interests. This is not just about Christian community. It is about very principle of democracy and justice in Pakistan. True representation is cornerstone of any democratic society. When the segment of population is denied its right, the entire democratic fabric of the nation is weakened.
We call upon judiciary to recognize the urgency and importance of this matter. We urge them to uphold the principles of justice and equality that are enshrined in our Constitution. We also call upon the government to acknowledge the legitimate demand of the Christian community and to take steps to rectify the long-standing injustice. To our fellow citizens, we ask for your support. Stand with us in our fight for justice. This is not just about Christians. It is about ensuring that all Pakistani, regardless of their faith, have the right to be heard and represented. To the media, we ask and we request for your continued coverage and support. Your role is shining a light on these issues is crucial. Through your reporting, you can help bring about the change that our community so desperately need. Thank you very much. क्लर्जी, क्रिश्चियन क्लर्जी और चर्च की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको ये राइट मिलने की ज़रूरत है कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं पार्लियामेंट्स के लिए, असेंबली के लिए इलेक्ट कर सकें। अभी जो हमारा निज़ाम है ये मुशर्रफ दौर में आया कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया। इस वजह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इन पर्टिकुलर उसमें अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर असम्बलियों में नहीं आते। कुछ हमारे भाई बहन जो असम्बलियों में हैं वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से अननोन हैं, कम्युनिटी जिनको जानती नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी ने उनको वोट नहीं दिया है, इसलिए वो कम्युनिटी के लिए ज़्यादा काम जो है और मुफीद और मुअस्सर काम जो है वो नहीं कर पाते। सो हमारी ये दरख्वास्त है कि जो मुशर्रफ का ऑर्डिनेंस था उसे रिवर्ट किया जाए और एक बार फिर से जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको ड्यूल वोट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका राइट है वो दिया जाए ताकि हम अपने नुमाइंदे खुद सेलेक्ट कर सकें, इलेक्शन के थ्रू ला सकें, जो हमारी कौम की आवाज़ बने, जो हमारी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को, नीड्स को गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकें। और हमारे जो बहुत से मसाइल हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के इन पर्टिकुलर वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि असेंबलियों में हमारी आवाज़ मौजूद नहीं है। असेंबलियों में सिलेक्टेड लोग हैं जो अपनी पार्टीज़ के मंशूर के मुताबिक, फेवर के मुताबिक चलते हैं। सो हमारी कोर्ट से ये दरख्वास्त है और मीडिया से भी कि इस ज़मन में हमें सपोर्ट करें कि एक बार फिर से जो मिनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनको ये हक़ हासिल मिले कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं वो खुद सेलेक्ट कर सकें। Utmost sincerely to joining us today for this press conference for minority seeking the direct election in Pakistan. The case name is Dr. Javed Rauf versus Federation of Pakistan, etc. I take you through about the case, what is happening here. First of all, I am professor and also advocate, and I am from Muslim community and leading this case. The non-Muslim representation in Parliament has been debated for so long, and the Christian in Pakistan continue to be considered as second-class citizens. This is the view continuously reinforced at the highest level of government. And the current reserve system introduced by, as my senior colleague said, that 2002 through 18th Amendment of Constitution, that since it has been represented, have expressed serious reservation on the joint electoral system, because legislators who were appointed by mainstream political parties through the reserve seats are under the obligation to serve their masters, i.e. the political leaders.
while ignoring the problems and issues faced by members of Christianity. The problems such as forced conversion, abduction, high level of poverty, and engagement in low-skilled occupation. This is the reality, and this is the matter of great importance to draw the authority and administration to their attention. This is the time now to do something and reform the constitution. When you have registered voter of Christianity 4.43 million who are they are voting and that does not actually translate into a parliamentary seat, that means parliamentary system does not work. And what does this system to give favor to those big parties and keeps them in power? And there is a massive disconnect we see between elite in big cities like capital Islamabad and what people are saying in the rest of the country. So the law position is there. The constitution to ensure their political inclusion. Non-Muslim seats in national assemblies are 10, 4 reserved seats in Senate, 1 from each provision under the Article 51(4) of the Constitution of Pakistan, and the provisional assemblies following are reserved seat for non-Muslim as provided by the Article 106B of the Constitution, and each provision, Balochistan have 3 non-Muslim seats, Khyber Pakhtunkhwa 4, Punjab 8, and Sindh 9, and total number of representation, if you see the seats and the Christian population of the registered voter 4.43 million against 24, does it represent democracy? It is the basic principle of democracy. It is against that. And we are signatory of a lot of treaties. The Pakistan is under obligation Article 3, which is very important, of the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 3, it says the state parties to the present covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present covenant 44. Pakistan is in clear violation of the country commitment with the international legal treaties and standards, which is against the basic principle of the democracy. The will of the people is a matter of great public interest. Therefore, non-Muslim has legitimate claim to seek the court approval to revisit those said provisions. Article 239, it suggests that any reform, you might have a question that come to Parliament by 2/3 majority. We have been tried our representative in Parliament, Article 239, but it has been defeated by the ill will of the elite and the big political powers. They don't want to see reform head away, and the given circumstances when the legislature has no intention to reform current law, then the constitution may intentionally open the field for the judicial interpretation, which can be revised, changed with the time to time. This is totally, as I said, this is the need of the time that Christians, grievances and demands of dual voting right to be upheld under the Jinnah vision of a united and tolerant Pakistan. Thank you. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी फुल रिप्रेजेंटेशन हो और उसके लिए एक केस फाइल किया। आज से 2014 में लगभग रमेश कुमार जो एमएनए थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया था जिसे जो है उसकी तजियाबाद दी गई और उसको फेंक दिया गया डस्टबिन में। तो हम चाहते हैं कि अगर पार्लियामेंट से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम अपनी आज़ाद अदलिया जो पाकिस्तान की है उससे दरख्वास्त करें कि वो इंटरवीन करे, और क्योंकि उनके पास ये राइट है कि वो इंटरप्रिटेशन कर सके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है
وہ ہمیں چاہیے جو کہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، اور اس کے لیے ہم یہ فائٹ کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو سے درخواست ہے میڈیا سے، تمام تر ٹی وی چینل سے، تمام تر پرنٹ میڈیا سے، کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. پاکستان کے مسیحی جو ہے وہ بہت پرامن ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. اور آج بھی ہم یہاں پر کسی ایجیٹیشن کے تحت نہیں آئے، بلکہ ہم نے ایک قانونی رستے کو جو ہے وہ اپنایا ہے، تاکہ پیسفلی جو ہے ہمیں جو ہمارا الیکٹورل رائٹ ہے وہ دیا جائے، تاکہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو خود سے الیکٹ کر سکیں. اور میری پارلیمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس پر غور کرے، ایز ویل ایز ہائی کورٹ جو کوئی کیس لگا ہوا ہے. اور جو ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو سلیکٹیو ہیں، ان کو بھی اس پہ خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کو بھی امپاور کرے گا. جب وہ الیکٹ ہو کر عوام کے ووٹ سے آئیں گے تو وہ جو ہے وہ ان کے پاس اتھارٹی ہوگی، ان کے پاس پاور ہوگی، اور وہ جو ہے ہماری ٹرو ریپرزنٹیشن کر سکیں گے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی اس چیز سے خائف نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ کو ہمیشہ جو ہے اولویت دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند ہو، اور ڈیموکریٹک رائٹ جو مائنورٹیز کے نان مسلمس کے ہیں، انکلوڈنگ کرسچن، ہندو، سکھ، سارے جتنے بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ دیا جا سکے. یہ ایک چھوٹی سی استدعا کی گئی ہے کورٹ کے ذریعے. ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی، اور جج صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ وہ جو بل پیش کیا تھا رمیش نواز نے، اس کو پریزنٹ کیا جائے. اور 25 تاریخ کو سیکنڈ ہیئرنگ ہے، جس میں ہم نے وہ بل پیش کرنا ہے. اور بل کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا. اور یہ ہمارے دستوری حق جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ باز رکھا گیا ہے. جان بوجھ کے ہم سوچتے ہیں کہ دس از انجسٹس، یہ انصاف نہیں ہے. تو ہم نے انصاف حاصل کرنے کے لیے پراپر رستہ اپنایا ہے، اور وہ ہے کورٹ، ہائی کورٹ. اور میری درخواست ہوگی تمام میڈیا سے بھی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس میں، تاکہ ہم اپنی ریپرزنٹیشن لے سکیں، اور پاکستان کی ترقی میں، خوشحالی میں ہمیشہ سے جو ہے وہ کارآمد ہو سکے، اور اس کے وقار کو جو ہے بلند کر سکے. پاکستان زندہ باد.